Hello everyone. In this video, we will discuss about the chemical properties of alkaline earth metals, and in the previous video we discussed about the chemical properties of alkali metals. तो अब हम बात करेंगे alkaline earth metals की chemical properties की. First of all, we will compare alkaline earth metals with alkali metals in their some properties on which these chemical properties depend. जैसे हम बात करेंगे द एटॉमिक साइज की. एज वी नो, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, so alkali metals are larger than alkaline earth metals. So if they have larger size, they can lose their electron easily. Okay, so they have low ionization enthalpy, and there are some other properties which we have discussed in previous videos, which decide the chemical reactivity. और इन सब से हमें क्या पता लगता है कि एल्कली मेटल्स दे आर मोर रिएक्टिव देन दीज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अगर हम हर रिएक्शन में इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, बट ओवरऑल वी नो that these are smaller, so they have less tendency to lose the electron. As these are metals, हम electron lose करने की बात करेंगे, so they have less tendency to lose the electron and they are less reactive as compared to alkaline earth metals. But if we compare these alkaline earth metals with the other metals of the periodic table, ये उनसे ज़्यादा reactive हैं, क्योंकि अगर हम और आगे जाएंगे, other metals they have even smaller size, तो उनसे compare करूँगा तो ये ज़्यादा reactive होंगे. So let's start with the first property, and that is reaction with air or with oxygen mainly. In air we will discuss about the reaction with nitrogen only. So what is the reaction with oxygen? First of all, see, as we know, down the group atomic size increases. Down the group atomic size increases from barium to radium. Okay, so if down the group size increases, then the chemical reactivity also increases. As they can lose electron easily, they react easily. तो यहाँ हम देखेंगे जो बेरियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है, वो नॉर्मली नहीं होती है. सो बेरिलियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट मोर देन 600 केल्विन टू फॉर्म इट्स बेरियम ऑक्साइड. इतने हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्शन करता है. While magnesium and other metals, they react easily with oxygen to form their oxides, MgO, CaO, SrO. This is BaO2. You can see barium forms barium peroxide. These all are oxides. These all are oxides. ये सब oxide बना रहे हैं. Oxide मतलब oxygen with 2 negative charge. But this is peroxide, O2 minus 2 charge. Okay, O2 with 2 negative charge. That is peroxide. ये peroxide बनाता है. Even radium also forms peroxide, RaO2. Okay, radium is a radioactive element, but still when it reacts with oxygen it forms peroxide. अब ये ऑक्साइड और ये peroxide बनाते हैं. हम प्रीवियस वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स विद एयर हमने उसमें डिस्कस किया था कि ऊपर ऑक्साइड, उससे नीचे peroxide, उससे नीचे वहां पर तो सुपर ऑक्साइड भी था. बट हियर दे फॉर्म ओनली ऑक्साइड एंड peroxide. And the reason is same as we have discussed in group 1 elements. Okay, these metals they react with nitrogen to form their nitrites also. Okay, they form their nitrites also. ये N3 N2 type ये nitrites भी बनाते हैं. These are alkali metal nitrites. ये भी बनाते हैं. Just like Mg3N2, Be3N2, Ca3N2, these all are nitrites which are formed by the alkaline earth metals. So their reaction with oxygen and with nitrogen are simple. Okay, the complication is here where barium and radium they form peroxides. Okay, and all these metal oxides, all these are metal oxides. So they will be basic in nature. ये सब जो है metal oxides हैं. We know metal oxides are mainly basic in nature. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये अपना basic nature show करते हैं when they are dissolved in water. So let's discuss about the second property, and that is the reaction with water. Reaction with water. अब water के साथ उनकी reaction कैसे होती है? In alkali metals we see these alkali metals are highly reactive. They show vigorous reaction, explosive reaction with water. सोडियम को पानी में डालिए आग लग जाएगी. इसी तरह से हम यहाँ पर देखें कि अगर alkaline earth metals की बात करें, again they are less reactive than alkali metals, so their reactions are less vigorous than those of alkali metals. उनसे slow reaction होंगी, उतनी ज़्यादा explosive नहीं होंगी, उतनी ज़्यादा heat produce नहीं होगी. Even this beryllium has no reaction with water. As you know, this is the smallest element in all the S block elements, which are metals. Okay, I'm excluding H.
So this is the smallest element. So this beryllium does not react with water. इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है वाटर के साथ. While magnesium जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हमें either we have to provide boiling water or we have to provide steam. Okay, either we provide boiling water or we provide steam. Then it forms its hydroxide MgOH twice, which is called milk of magnesia. Okay, which is called milk of magnesia. वो तब बनाता है जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं किससे, बॉइलिंग वाटर और स्टीम से. द नेक्स्ट एलिमेंट्स मींस कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, दे ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड वेरी इजीली. वो बहुत इजीली वो अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, वो बहुत इजीली अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. दे ऑल्सो लूज हाइड्रोजन गैस इन दिस रिएक्शन. वो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लूज करते हैं और इस तरह से वो अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं. सो दीज मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज होती है. और ये सब जो लोअर एलिमेंट्स हैं मीन्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑल्सो. वो बहुत इजीली रिएक्शन कर लेते हैं. बट द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज विद बॉइलिंग वाटर while the beryllium does not react with water or steam. Okay, because of its very low reactivity. So this is the reaction with water. So the third reaction is with halogens. With halogens, they form their halides. They form their alkaline earth metal halides of the formula MX2. This is the formula. And how can we prepare these alkaline earth metal halides? By the reaction with halogens. Means simple, by when any metal like magnesium, calcium, other metals, they react with halogen directly. They form their MX2. And when we compare this reaction with the alkali metals, they react at elevated temperature. They react at high temperature. ठीक है, उनसे उनके कंपैरिजन में ये हायर टेम्परेचर है. So they form MX2 type compounds like CaCl2, like MgBr2. These type of compounds are formed. For beryllium halides, we use some special methods. Means these beryllium fluoride and these beryllium chloride compounds can be prepared in a better way by these reactions. See, this is NH4 whole twice BeF4. By the thermal decomposition of this compound, we can prepare BeF2. हमने क्या किया, सिंपल इसको हीट किया, it breaks into, it decomposes into ammonia, BeF2 and HF, और हम यहाँ से जो है BeF2 को easily बना सकते हैं. When we react this beryllium oxide with carbon and with chlorine gas, we form BeCl2. हम beryllium chloride हमें मिलता है, we get carbon monoxide as the side product. So to prepare beryllium fluoride and chloride, we use some special methods. Now why? Again, because of the low reactivity of beryllium. हमें पता है सबसे small element है ग्रुप का, so its reaction will be slower as compared to the others. तो इसकी जो रिएक्शंस हैं वो डायरेक्टली रिएक्शन करना इतना इजी नहीं होता जितना कि हम अदर मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकें. ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस विद हैलोजेंस. किस तरह से वो हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. नाउ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन. द फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, if they will react with hydrogen, we know these are metals. Hydrogen has both tendency to lose the electron, to gain the electron, and it can share the electron also. But as hydrogen is reacting with the metals here, so hydrogen will gain the electron because metals have tendency to lose the electron. तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेंगे वो होंगे metal hydrides. And in metal hydrides, जो metal है वो positively charge होगा, hydrogen negatively charge होगा. Okay, so except beryllium, all other metals they react with hydrogen to form their metal hydrides of the formula MH2, like CaH2, MgH2. तो ये सब हमारे पास हाइड्राइड्स मिलते हैं MH2 फॉर्मूले के. बट बेरिलियम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बेरिलियम हाइड्राइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय दिस मेथड. अगेन बेरिलियम सबसे स्मॉल एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होगी जितनी कि अदर एलिमेंट्स की है. सो for beryllium we use a different method. What we do, we react beryllium chloride. अभी हमने बनाया था beryllium chloride. It reacts with lithium aluminium hydride. इसके साथ हमने रिएक्शन की. इसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं we get what our desired product, that is BeH2. हमें BeH2 यहाँ से मिलता है. We get some other products LiCl, we get AlCl3 also. ये
हमें साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. We get 2BeH2 and the reaction is balanced. So by this method we can prepare this BeH2 and what about its structure? Actually BeH2 has a polymeric structure. It has a polymeric structure where we have a special type of bonding. Actually this bond is not a simple covalent bond. It's a three center two electron bond. Okay, 3 center 2 electron bond means one Be, H and Be. These three elements are overlapping, are means sharing their orbitals, but only out of these three orbitals only 2 have electrons and one is vacant. तीन में से कोई से दो के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है एक एक और तीसरे का ऑर्बिटल वैकेंट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeH2. Let's talk about their covalent and ionic nature. Because of the small size of beryllium and magnesium, their hydrides are covalent in nature. ये जो दो एलिमेंट्स होंगे इनके हाइड्राइड्स जो हैं वो कोवलेंट नेचर के होंगे, while all other hydrides are ionic in nature. All other hydrides are ionic in nature. Small elements and we know small जो cation होते हैं they form covalent hydrides. So these are covalent in nature, while other are ionic in nature. Okay, this is about reaction with hydrogen. Let's talk about reaction with acids. अब वो उनकी reaction acids के साथ कैसी होंगी? Reaction with acids like HCl, H2SO4, इनके साथ उनकी reactions कैसी हैं? These are simple reactions जैसे हमने अभी बनाए थे. This is the fifth reaction with acids. Very simple reaction. Metal when react with acid like HX, for example, if magnesium react with HCl, what will be the product? MX2 plus which gas? Yes, it is hydrogen gas, which gives pop sound. So magnesium chloride with hydrogen gas, hydrogen is involved here. So with HCl acid they form their chlorides, they form their halides along with hydrogen gas. When we react these metals like Mg or Ca or any other element with sulfuric acid, they form their sulfates MgSO4, again with the same gas hydrogen, because this is the property when any metal reacts with acid it forms hydrogen gas and gives a Popsong test. Okay, so this is the reaction with acid. Okay, now let's move on to the next property and that is reducing nature of these alkaline earth metals. हमने alkali metals में भी इस बारे में डिस्कस किया था and we discussed there that this reducing nature actually depends on the E0 value. ये डिपेंड करता है किस पे? E0 वैल्यू पे. E0 वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है that means that metal has high reducing power, it has high reactivity, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. Okay, so actually E0 value is more negative and that depends on the 3 enthalpies. These are the 3 enthalpies, means we have to convert a metal from its solid state to metal in its ionic form but in aqueous state. Okay, so what are these 3 enthalpies? हमने last भी discuss किया था. First of all, we have to convert this metal from its solid state to gaseous state. That means we have to provide atomization enthalpy. जितना जल्दी metal solid से gas बनेगा वो उतना ज़्यादा reactive होगा. So this atomization enthalpy should be low. When what we do, metal from its gaseous state is converted to its ionic state. क्योंकि ionization enthalpy है हमें gaseous form चाहिए, isolated gaseous atom. So metal जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव माना जाएगा. So this value should be low again. Now from its gaseous state we convert it into aqueous form. And if the metal in its ionic state is stable, ये stable कब माना जाएगा? When it has very high value, highly negative value of its hydration enthalpy. So if these conditions are fulfilled, then the value of E0 is highly negative. तभी ये E0 की value highly negative होगी. अगर ये value नहीं जाती हैं तो highly negative नहीं होगी. And when we move from beryllium to barium, what we see that from beryllium to barium जो ionization enthalpy है, because this value mainly depends on ionization enthalpy, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो हमारे पास जो टेंडेंसी है.
तो हम देखते हैं कि आयनिक एंथैल्पी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है, तो उस इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली वो डिक्रीज करेगा उतनी ही इजीली उसकी यहाँ से यहाँ पहुंचने की पावर होगी, मींस उसकी ई नॉट वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो इस तरह से आता है। ओके, we expect that this beryllium should be very low in its reducing power, but इसकी वैल्यू उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी हाई होती है। आई एम नॉट सेइंग बेरिलियम की किसी से हाई जा रही है, बेरिलियम की अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी हाई होती है, बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज क्वाइट हाई। जानते हैं स्मॉल आयन है तो उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी। सब्लिमेशन या एटमाइजेशन एंथैल्पी भी इतनी हाई नहीं होती, ये भी लो ही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज बेरिलियम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा सा हाई होता है, बट स्टिल it has least reducing power in its group. Okay, and when we compare these alkaline earth metal with the alkali metals, their reducing power is very high, their E naught values are highly negative. Why? Because we know alkali metals have very low ionization enthalpy, उनकी वैल्यू बहुत लो है तो वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये जो वैल्यू है ionization enthalpy इसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव है। So this is all about reducing nature. Okay, the concept is this, that reducing power decreases from barium to increases from beryllium to barium. Okay, because of these enthalpies. ठीक, next move on to the next property, and this is reaction with liquid ammonia. Reaction with liquid ammonia, we also discussed this property in alkali metals. हमने पिछली वीडियो में alkali metals में भी इसको डिस्कस किया था, आप लोग उसको जरूर देखिए, वहाँ पर हमने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर इतनी डिटेल है नहीं हमारे पास। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया सिंपल, जैसे वहाँ पढ़ा था मेटल, any metal when it reacts with ammonia, liquid ammonia, we are using x plus y number of NH3 molecules, and these molecules they form their ions, ammoniated ions। होता क्या है, जैसे हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, this metal it divides into two parts, as it can lose its 2 electron, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, and can form its cation, divalent cation M2 positive with 2 electrons। So what happens, this M2 positive combines with x number of NH3 molecules to form its ammoniated cation, MnH3 X2 positive, and these 2 electrons they combine with the another group of NH3 to form its ammoniated anion। Okay, and again this solution is deep blue or deep blue black in color। ये deep blue black color का होता है, why? Because of these ammoniated electrons, and this solution is also conductor क्यों है? Because we have cations and anions here। So this is the reaction of liquid ammonia with these metals। metal जो है यहाँ पर हमारे पास कोई सा भी हो सकता है इस ग्रुप का। So all these are the reactions of alkaline earth metals। This is all about this topic। Okay, thank you।